जय जगन्नाथ फिजिक्स हंट को समस्त को स्वागत। आज आमे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर विषय पढ़िबा। पिला माने आमे जेमिति जानिचंती कि हमर निजर दैनंदिन जीवनर प्रत्येक कार्यठु आरंभ करी प्रकृतिर प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया आउ प्रक्रिया पय गोटे बल बा फोर्स रो आवश्यकता अछि। तेनु फोर्स इज बेसिकली ए पुश और पुल, जहाँ को आमे गोटे एक्सटर्नल एजेंसी बा एजेंट माध्यम रे गोटे बॉडी बा गोटे ऑब्जेक्ट उपरे प्रयोग करिथाउ। तेणु आज आमे सेही प्रकृति बा नेचर जो फंडामेंटल फोर्सेस अछि से विषय रे पढ़िबा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। सेगुड़ी को कौन कौन? ए ग्रेविटेशनल फोर्स, बी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, सी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, डी वीक न्यूक्लियर फोर्स। पिला माने ध्यान रखो, एमिति नुहे जे कि प्रकृति रे केवल एई आमे चारि प्रकार फोर्स को अनुभव बा एक्सपीरियंस करंती। ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बा विशाल ब्रह्मांड रे अनेक प्रकार फोर्स को आमे एक्सपीरियंस बा अनुभव करथांती। फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स, आमे गोटे शारीरिक कार्य बा फिजिकल वर्क करिया पे जो फोर्स बा शरीर रो जो मसल पावर को यूज करंती ताको आमे मस्कुलर फोर्स बा शारीरिक बल रूप में कहितो। सपोज गोटे मु बकेट को लिफ्ट करिवि, गोटा पानी भरा बकेट को मोर उठेबार अछि, तेणु मु मोर मांसपेशीय बल बा शारीरिक बल को व्यवहार करूची। सपोज गोटे गतिशील गाड़ी रे गोटे हठात मते ब्रेक मारिबार अछि, मु ब्रेक अप्लाई कली आउ गाड़ी रो गति अटकी गला बा व्हील बुलिबा आरंभ बंद कर देला, तेणु से जो बल बा कांटेक्ट फोर्स को मु प्रयोग कली ताको हमें फ्रिक्शनल फोर्स बोली कहउचंती। तेणु एमिति apart from these four fundamental forces there are various kind of forces that we observe। किंतु एठी कथा होची ध्यान रखिबार बा माइंड रे रखिबार कि जेते प्रकार फोर्स अछि एई चारिटा फंडामेंटल फोर्स रो डिराइव हेची बा मूल फोर्स रो आसीची। तेणु फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर पढिबा पूर्वरु हमें बेसिक जिंस कोन बुझिबा गोटे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल अर्थ कोन? फंडामेंटल मींस बेसिक or from which other things are drawn। जो थिरु जो मूल वस्तु बा पदार्थ रु बा जो मूल रु हमर अन्य जिंस को हमें बाहर करचंती बा डिराइव करचंती बा ड्रॉन करचंती ताको हमें फंडामेंटल बा बेसिक बा बेस मूल बोली कहउचंती। तेणु नेचर रे चारि प्रकार फंडामेंटल फोर्स अछि: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाउ द क्वेश्चन इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हमें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड रे अनुभव करूछा बेले जेतले माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड रे हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आउ वीक न्यूक्लियर फोर्स को हमें अनुभव करंती बा एक्सपीरियंस करंती। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड अर्थ लार्ज वर्ल्ड आउ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड अर्थ जेतला हमें माइन्यूट स्केल ले गोटे जिंस को हमें ऑब्जर्व करचंती बा फील करचंती ताको हमें फिजिक्स रे माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स बा क्वांटम फिजिक्स बोली कहिता। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बा ये सीरीज रे फर्स्ट रहिला ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होची गोटे यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ को आमे शॉर्ट रे एफ जी बोली लिखि था। सो ग्रेविटेट इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन two bodies by virtue
of which by virtue of their masses. 8 पिला माने डायग्राम को लक्ष्य करो. सपोज ये गोटे बॉडी both having masses m1 and m2 respectively. तेणु ये दीटा ऑब्जेक्ट को having masses m1 and m2 को आमे गोटे r डिस्टेंस रे अलगा अलगा रखिले. आउ ताकर दुई जनकर मास जोगु जो फोर्स बॉडी ए एक्सर्टेड ऑन बॉडी बी एंड बॉडी बी एक्सर्टेड द फोर्स ऑन बॉडी ए, ये जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहिला ताको हमें ग्रेविटेशनल फोर्स बा माध्याकर्षण शक्ति बोली कहउछन. इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस. ताको हमें केमिति प्रकाश करिबा ना, इफ टू बॉडीज having masses m1 and m2 are placed at a distance r, then the force of attraction between the bodies is Fg equal to mg into m1 m2 upon r square. m1 कौन ना mass of body A, m2 is the mass of body 2, r is the distance between of separation and g is the universal constant. g को हमें कौन कहती ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. जी गोटे कांस्टेंट जार वैल्यू ऑल ओवर द यूनिवर्स समान रहिबो 6 into 6.67 into 10 to the power minus 11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जार वैल्यू होची 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये गोटे यूनिवर्सल कांस्टेंट बा जहा को हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोली कहि थाउ. एटा एंटायर यूनिवर्स रो सब प्लेस रे कांस्टेंट वैल्यू रहिबो. एटा को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोली पा जाए बा एफजी कहा जाए. सेकंड थिंग कोन हला ना, इट इज ए यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जेकोसी मास थिबा दुईटा बॉडी को बा वस्तु को आमे पाखापाखि रखिले सेमाने को भितरे गोटे परस्पर अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करिवो जहा को आमे ग्रेविटेशनल फोर्स बोली कहउचंती. तेनु इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. तेनु इट इज ए यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओबेइंग द लॉज ऑफ रिवर्स स्क्वायर लॉ. एट ध्यान रखो पिले माने गोटे शॉर्ट क्वेश्चन आसे, दीटा शॉर्ट क्वेश्चन एठी परिबो. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए यूनिवर्सल डैश अट्रैक्टिव फोर्स. सेकंड कोन ग्रेविटेशनल फोर्स ओबेज डैश कोन ना रिवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्सली स्क्वायर लॉ को ये ओबे करे. काहे करे ना, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. दीटा ऑब्जेक्ट भीतर डिस्टेंस रो सेपरेट स्क्वायर को ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल करे. किए करे ना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्थ पॉइंट रे कोन लिखिबा, इट इज द वीकेस्ट. जत्ते भी नेचर रो फोर्स अछि सबुठु वीकेस्ट फोर्स किए ना ग्रेविटेशनल. इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर. ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर. तेणु जदि ए ग्रेविटेशनल फोर्स विषय रे किछि क्वेश्चन आसे तले हम एतिक पॉइंट लिखि देले हमर सफिशिएंट हबो. आ गोटे कथा पिला माने एठी माइंड रे आसुची कि दीटा वस्तु को जदि हमें पाखापाखि रखि देउचंती ताकर मास जोगु काहे कि सेमानक भितरे गोटे आकर्षण रो बल सृष्टि होउची बा व्हाई द टू बॉडीज अट्रैक्ट्स ईच अदर. जेतले हमें फर्दर हायर स्टडीज को जीवा सेतबेले एटा विश्वास करा होउची कि जो दुईटा बॉडी अछि सेमानक भितरे गोटे ग्रेविटन नामक एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल एक्सचेंज जोगु
एई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन राइज होउची बा जनरेट होउची द एक्सचेंज ऑफ एक्सट्रीमली टिनी पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटन बुझियाला पिला माने एटा मने रखिबो जेतला हमें हायर स्टडीज को जीवा ए विषय रे डिटेल्स रे पढिबा मीन व्हाइल वर्तमान पई ग्रेविटेशनल फोर्स कथा उठले हम एतिक पॉइंट लिखले हम पई सफिशिएंट हबो नेक्स्ट कोन ए सीरीज रे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो ए फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर पिला माने नोट लिखनियो 30 सेकंड रो टाइम नोट लिखनियो तापर हमें सरला नोट करिवा नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भले से डायग्राम को लक्ष्य करो फर्स्ट डायग्राम रे कोन अछि सेकंड डायग्राम रे कोन अछि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स फर्स्ट डायग्राम में हम लक्ष्य करचंती गोटे मैग्नेटिक फ्लक्स गोटे कॉइल कॉपर कॉइल मध्य दे की जाइछ तेनु एठु हम जेतले गोटे मैग्नेटिक फ्लक्स बा मैग्नेटिक फील्ड को गोटे कॉपर कॉइल कट करची बा इफ देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए करंट कैरिंग कॉइल देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल आर अर्थ होची मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आउ एठी कोन होची ना सेकंड डायग्राम रे कोन होची गोटे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मध्य रे जेतले इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होची ता चारि पटरे गोटे विद्युत चुंबकीय बा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होउची तेनु एठु हमें कोन बुझिले फर्स्ट डायग्राम रो बुझिले कि मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी सेकंड डायग्राम रे हमें कोन बुझिले ना इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड तेनु एई जो परस्पर ऊपर निर्भरशीलता बा जणे जनक ऊपर निर्भरशीलता को आमे केबे भी अलगा करि परिबा नाही जोठी मैग्नेटिक फील्ड थिबो जो इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हेबो एवं जोठी गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर भीतर मध्य देई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होबो तार चतुर्पार्श्व रे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होबो तेनो एई जो परस्पर गोटे फोर्स रो दीटा फेस टाइप रो काम करिवा को आमे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोली कहंती बा सेई फोर्स को आमे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोली कहंती तेनो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फर्स्ट पॉइंट लिखो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट it seems both the forces are inseparable एमिति लागिवो कि दीटा फोर्स को हमें परस्पर ठो अलगा करिबा करि परिबा ही नाही जोठी मैग्नेटिज्म रहइबो सेठी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होबो आ जोठी इलेक्ट्रिसिटी थिबो सेठी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होबो तो इट सीम्स बोथ द फोर्सेस आर inseparable or it seems like two faces of a general force called electromagnetic force एबे बुझियला electric current can produce magnetic field and magnetism can produce electric current it seems both the forces are inseparable or it seems like the two faces of a general force called electromagnetic force
and it is 10 to the power 36 times stronger than the gravitational force. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रहुची that is 10 to the power 36 times stronger than the gravitational force. एक मार्क रो क्वेश्चन आसी पारे. नेक्स्ट कौन पिले माने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. आमे कौन जानथिले जेतले माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बा लार्ज स्केल लो जो वर्ल्ड विशाल काय ब्रह्मांड रे आमे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आउ ग्रेविटेशनल फोर्स को अकाउंट को नबा. किंतु जेतले प्रश्न माइक्रोस्कोपिक लेवल ले बा माइन्यूट स्केल लेवल ले आसीबो सेतले आमे काहा विषय रे पढुचंती एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एमानक विषय रे पढुचंती. तो एमानक भितरे जो फोर्स वार करची बा मेकानिक्स काम करची ताकू केमिति को फोर्स सेठी काम करची से विषय जो पढुचंती ताकू कहा देरा हम इंक्लूड करचंती ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रे इंक्लूड करचंती आउ वीक न्यूक्लियर फोर्स रे इंक्लूड करचंती. तेणु वर्तमान कोन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विषय रे हमें पढिबा. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स it is the strong force of attraction. It is the strong force of attraction which binds the proton and neutron inside a nucleus of an atom. एटम रो सेंटर रे जो न्यूक्लियस अछि ता मध्य थिबा जो प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन जो बल द्वारा परस्पर सहित बाइंडिंग हेक रहिचंती बा न्यूक्लियस भितरे स्टेबल हेक रहउचंती सेही फोर्स बा स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स को हमें कोन कहउचंती ना स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स. इट इज द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which binds the proton and neutron inside a nucleus of an atom. Next point कौन? It is a very short range force. कहीं ना न्यूक्लियस रो साइज हम जानछन इटसेल्फ ए वेरी स्मॉल. तेणु जो फोर्स न्यूक्लियस भितरे ऑपरेट होउची बा कार्यकारी होउची तेणु ऑब्वियसली से गोटे शॉर्ट रेंज रो फोर्स हेथिबो. तेणु इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स only operates within the size of a nucleus जहाँ को हमें 10 to the power 15 मीटर बोली जानी चंदी. नेक्स्ट पॉइंट कौन आउ जेमिति ग्रेविटेशनल फोर्स होची नेचर रो सबुठुर वीकेस्ट फोर्स सेमती स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कौन ना नेचर रो सबुठुर स्ट्रांगेस्ट फोर्स. This is the strongest force of nature जोटा कि 10 to the power 38 times stronger than the gravitational force. बुझिला पिला माने स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ऊपर जदी क्वेश्चन आसे ताले एई पॉइंट गुडी हमके लिखि देले हमरो सफिशिएंट हबो. या भितरु शॉर्ट क्वेश्चन भी आसी पारे देखिने. 30 सेकंड टाइम एको नोट डाउन करनियो. आउ डायग्राम रे देखो केमिति न्यूक्लियस भितरे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन परस्पर गुटे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स माध्यम रे परस्पर सहित जड़ित होई रहिचंती बा बाइंड हेकी रहिचंती. Now the next in series is weak nuclear force. Sorry, note down.
weak nuclear force जेमिति प्रोटॉन आ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस भितरे बांधी रहिबा पई हमर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स आवश्यकता पड़िला सेमिति जेतळे वेरियस काइंड ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस होउची बा रेडियो एक्टिव प्रोसेस होउची सेतବେଳେ हमर गुटे फोर्स रा आवश्यकता पड़ुची ताकू हमें कोन कहउचंती ना वीक न्यूक्लियर फोर्स सो लेट्स राइट इट इज द फोर्स only appears between the elementary particles when they involve in a nuclear process like beta decay बुझिला it is the force only appears between the elementary particles when they involve in a nuclear process like beta decay how beta decay कौन in beta decay in beta decay the nucleus of an atom emits electron and an uncharged particle called neutrino uncharged particle called neutrino तेणु जेतले हम क्वेश्चन माइंड रे आसीबो व्हाट इज बेटा डिके इज ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस प्रोसेस जोथरे गुटे न्यूक्लियस रु गुटे इलेक्ट्रॉन एमिट हुए आउ कोन हुए गुटे अनचार्ज्ड पार्टिकल एमिट हुए जहा को हमें न्यूट्रिनो बोली कहिता देखो गुटे न्यूक्लियस भीतर थिबा न्यूट्रॉन केमिति प्रोटॉन को कन्वर्ट होउची आउ जो जेतले न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कन्वर्ट होउची सेतिर गुटे इलेक्ट्रॉन बाहरची गुटे एंटी न्यूट्रिनो बोली एलिमेंटरी पार्टिकल जोटा अनचार्ज्ड पार्टिकल केमिति एमिट होउची तेणु एथिरे बेसिकली कौन हुए ना एथिरे बेसिकली बीटा रे एमिट्स हुए कोथरु एमिट्स हुए ना न्यूक्लियस रु एमिट्स हुए इट इज 10 to the power 25 times stronger than the gravitational force आउ जेतेबेले बीटा रे एमिट हैला बळे जेतले न्यूक्लियस रु गोटे इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एमिट हुए सेते बळे एंड द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो interacts with each other with this weak nuclear force जेतेबेले न्यूक्लियस मध्यम रे थिबा न्यूट्रॉन नु इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो एमिट्स होचंती से इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन परस्पर भितर को फोर्स माध्यम रे इंटरैक्ट करंती बा परस्पर को अट्रैक्ट करंती ना वीक न्यूक्लियर फोर्स जो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10 to the power 25 times stronger than the gravitational force बुझिला बे एई जेतो वीक न्यूक्लियर फोर्स विषय आसीबो सेतले हमें एतिक पॉइंट लिखि देले सफिशिएंट हबो 30 सेकंड अछि लिखिनियो इट इज द फोर्स ओनली अपीयर्स बिटवीन द एलिमेंटरी पार्टिकल्स जेतेबेले एलिमेंटरी पार्टिकल कोन करचंती ना गुटे न्यूक्लियर प्रोसेस बा रेडियो एक्टिव प्रोसेस रे इन्वॉल्व होचंती सेतेबेले कोन होउची ना न्यूक्लियस रु बेटा रे बा बीटा डिके होउची बा न्यूक्लियर डिके होउची तो सेतेबेले कोन होउची ना जो न्यूक्लियस भीतर थिबा न्यूट्रॉन नो इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन एमिट होउची आउ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन परस्पर सहित गुटे वीक न्यूक्लियर फोर्स माध्यम रे इंटरैक्ट करूछन दीज आर द
फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर कौन कौन जानले ना ग्रेविटेशनल फोर्स गोटे हला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स गोटे हला स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स तेणु लेखिनियो नोट डाउन करनियो आशा करूची पिला माने आज रो क्लास को एंजॉय करथिबे आ फिजिक्स रो ए क्लास को भलो से ध्यान पूर्वक सुनिथिबे डायग्राम को देखो नोट डाउन करनियो